Good afternoon, everyone, and welcome to Advisor Alpha. Welcome to our live webinar on financial planning and where should you start and where should you begin and start. Today, I have Mr. Chirag Barot, our our Vice President from Renaissance Investments. He has a vast experience in financial markets, and he is one of the leading guys in this industry. So, over to, over to you, Chirag. Okay, thank you, Ronak, and good afternoon, friends. A warm welcome to all of you, and thank you for taking time out and joining this webinar on a Friday afternoon. Right, uh, what we'll be talking about in this webinar is basically what do we do, how do we begin, and I believe this is a very crucial time, a critical time when you've just started or stepped into the professional world, you just started earning, right? And this is the make or break point, what I believe. I can say this with personal experience also. Back when I started 20 years ago, what was the situation like, what it is right now. The world is changing pretty quickly. Just one wrong decision can lead to a lifelong burden, right? And when I say burden, in the sense, it takes away your freedom, it takes away opportunities, right? So how can we start, what is the right path, and how can we actually create wealth over a period of time? So that is what this whole webinar is all about. Okay, so I've got a small presentation. What I'll do is, in the next 15 20 minutes, I'll try to run you through a small presentation. Basically, it will give you an idea as to what is the cost of delay, or what is the cost of not acting, right? So for with my limited creativity, I have tried to create a presentation. And again, as I said, for lack of creativity, I've got a story of two sisters. One is called Kharchili, the other is called Bachat, right? Two sisters, same age, starting right now. Both of them, let's say, are drawing a 1 lakh rupees salary, right? But as the name suggests, both of them have different traits. Kharchili is, a little, as the name suggests, kharchili. So थोड़ा सा खर्चा करने में ज्यादा बिलीव करती है, and the kind of environment that is right now. तो शी इज गॉट अ लेटेस्ट आईफोन, एक लेटेस्ट आईफोन ले लिया खर्चीली ने, लाख रुपए का आईफोन ले लिया, लाख रुपए की सैलरी में लग्जरी ट्रिप कोई प्लान कर ली है उसने. शी इज गॉट क्रेडिट कार्ड्स, शी इज फाइनेंसिंग हर एक्सपेंसेस थ्रू कार्ड्स. तो थोड़ा सा खर्चा करने में ज्यादा बिलीव करती है. शी इज लिविंग अ लाइफ, लिविंग द ड्रीम. वेरेज बचत एक थोड़ी सी सबड्यूड है अपने खर्चे में. शी बिलीव्स इन रिस्ट्रेनिंग हर सेल्फ, नॉट गोइंग ऑल आउट. बड़ा आईफोन नहीं है उसके पास में, एक छोटा सा फोन है बेसिक जो अपना काम कर सके. बट व्हाट शी इज डन इज, शी इज, एज आई से, प्रूडेंट. एक इमरजेंसी फंड बना लिया है, गोल बेस्ड सेविंग कर ली है, और सेविंग को ये करने के लिए, मैक्सिमाइज करने के लिए, शी स्टार्टेड इन्वेस्टिंग ऑल्सो. वन नीड्स टू अंडरस्टैंड, जस्ट सेविंग विजाविज इन्वेस्टिंग आर टू डिफरेंट थिंग्स. सेविंग्स भी जरूरी है, एक इमरजेंसी फंड आप कॉर्पस क्रिएट करें, एंड उसके बाद में इन्वेस्टमेंट भी जरूरी है तो कॉर्पस को ग्रो करने के लिए, राइट? सो दीज आर दी टू ट्रेड्स ऑफ दीज टू सिस्टर्स. अब यहां तक तो ठीक है. इसके बाद में क्या होता है? 5 साल. Now this is something which I have faced when I started. I believed in spending, but at the end of 5 years, when we look at the story looks vastly different. ठीक है, 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, 3 साल हो गया. द सैलरी हैज इंक्रीज फ्रॉम 1 lakh to 1,20,000 फॉर बोथ द सिस्टर्स. अब जैसे सैलरी इंक्रीज हुई, सो खर्चीली ने अपने खर्चे भी इंक्रीज कर दिए. शी इज परचेज्ड एन एसयूवी, राइट, 25,000 रुपए का ईएमआई पे. वेरेज व्हाट बचत डिड वाज, शी इंक्रीज हर इन्वेस्टमेंट्स, राइट? तो खर्चा भी किया, बट उसके साथ में इन्वेस्टमेंट्स भी उसने करे.
And at the end of 5 years, when we look at it, the difference is huge. And when I say huge, it is actually huge. Difference is 40 lakhs. अगर आज हम खर्चीली की बात करें तो शी इज सिटिंग ऑन अ नेटवर्थ ऑफ 2 लाख रुपीज, राइट? एंड शी इज गॉट लायबिलिटीज, एक डिप्रिशिएटिंग एसेट है उसके पास में, कार. वेरेज बचत की बात करें तो शी हैज गॉट लिक्विड एसेट्स. लिक्विड एसेट्स मतलब विच कैन बी लिक्विडेटेड. जब पैसे की जरूरत हो तो 2 दिन के अंदर पैसा उनके पास में आ जाए. इट इज फेयरली लिक्विड. तो म्यूचुअल फंड्स है उनके पास में. एंड शी इज सिटिंग ऑन अ कॉर्पस ऑफ 42 lakh rupees vis-a-vis 2 lakh rupees for खर्चीली, राइट? सो ये डिफरेंस है. व्हेन वी लुक एट दिस इन 5 years टाइम, ये बहुत ही बड़ा अमाउंट है. आज व्हाट आई रिमेम्बर, एंड व्हेन माय डैड रिटायर्ड फ्रॉम हिज एक्टिव एम्प्लॉयमेंट, तो उनका नेट कॉर्पस, उनका जो सेविंग्स था at the age of 60 was EPPF का पैसा था which was 27 lakh rupees. 27 लाख रुपया at the age of 60 vis-a-vis 40 lakh rupees at the age of 30. Assuming we start at 25 साल की उम्र में स्टार्ट किया, किसी ने 22 साल की उम्र में स्टार्ट किया होगा, 5 साल के अंदर you have made a corpus which the older generation, which for lack of knowledge, उनको नहीं था, नॉलेज नहीं था, उनको गाइडेंस नहीं था. सो व्हाट दे डिड वाज दे saved into, as I said, saving and investment. So they saved. Whereas now we have, because of this social media and a lot of information, now we have also got the option of investing and investing into various asset classes, right? So ये सब करने के बाद में, if a person can make round about the kind of corpus which are the previous generation made over their entire professional career, yeah, working career, so that is quite huge. And this is just the starting point. I'd say 5 साल, initial 5 साल हम यही करते हैं. I did the same thing. I funded all my expenses through debt. I had a iPhone. I again the same similar story to what we have in this example. एक कार ले लिया, एक ये कर दिया, डेट ले लिया, क्रेडिट कार्ड डेट्स. एंड at the end of 5 years I was in a similar kind of a situation जो खर्चीली के केस में है. जो नेटवर्क जो मेरा है वो काफी कम था vis-a-vis someone who would have invested prudently. And my next 5 years were just spent in servicing that debt and clearing off that debt. So net if I say, I am 10 years behind what, or I was 10 years behind where I should have been, or I could have been rather. तो मैं 10 साल पीछे था. और 10 साल इन्वेस्टिंग में कंपाउंडिंग की अगर हम बात करें तो काफी बड़ा होता है, राइट? सो दिस इज बेसिकली ये एक एग्जाम्पल से मैंने आपको बताने की कोशिश की कि क्या कर सकते हैं, व्हाट आर दी what is the difference, क्या कर सकते हैं. तो something which we will talk about in the later slides. But what is the difference? अगर आप 100 मीटर की रेस में आप पहले से ही 20 मीटर पीछे खड़े हो, then obviously you will need to do that catching up, right? So this is a similar kind of a situation in life, where your initial 5, 7, 10 years could set you back by 20 meters in that 100-meter race, right? Vis-a-vis someone who's been prudent, तो उनके केस में they already have a head start. They already are 20 meters ahead. So difference is 40 meters. आप स्टार्टिंग लाइन से 20 मीटर पीछे हो, अगला जो है स्टार्टिंग लाइन से 20 मीटर आगे है. So obviously ये they have a head start and advantage है उनको when we look at it from a longer time frame, right? स्टार्टिंग फ्रेमवर्क हम कैसे क्या कर सकते हैं, राइट? मंथली इनकम है. मंथली इनकम का 50% goes into needs. Obviously you have needs, rental, you need to pay the rents, or you need to pay the what do you say, your basic expenses, living expenses. And there are wants.
राइट, नीड्स है, बेसिक नीड्स है, वांट्स है, एक थोड़ा सा एस्पिरेशन है, सो सम परसेंटेज ऑफ दैट शुड गो इनटू फुलफिलिंग योर वांट्स आल्सो, एंड some percentage, I would say 20 odd percent, should compulsorily be going into investing, because ये जो 20% है, if you do it regularly over the next 5 10 15 years, तो ये पैसा जो है काफी बड़ा होकर के आपको दिखेगा, राइट। सो हम कैसे ये कर सकते हैं, ऑटोमेट करें अपना। पहले तो हम, सबसे बड़ी बात है, डेट अवॉइड करें, राइट, जितना हो सके उतना। आई एम नॉट सेइंग कि कंप्लीटली अवॉइड डेट, अवॉइड कर सको कंप्लीटली तो बहुत अच्छी बात है, बट यदि ना कर सको तो एटलीस्ट बैड डेट अवॉइड करें। जो बहुत जरूरी है वो ले, जो कम जरूरी है उसको थोड़ी कम मात्रा में ले, बहुत ज्यादा जरूरी है तब वही जो है हम बड़ा डेट लेना चाहिए, वरना जितना हो सके उतना अवॉइड करें, राइट। दूसरा है स्केल विथ इनकम। जैसे जैसे अभी व्हेन आई स्टार्टेड ऑफ इन बैक इन 2003, माय सैलरी वाज 5000 रुपीज, राइट। आज की तारीख में व्हाट आई हैव डन इज, जैसे जैसे मेरी सैलरी ग्रो हुई है, पहले 5 साल तो मेरे भी, जैसे मैंने बताया एग्जाम्पल में कि खराब हुए, बट व्हेन आई रीगेन्ड व्हेन आई गेन दिस इनसाइट, जब मुझे थोड़ा सा एक समझ आई, हालांकि देर से आई, बट जब समझ आई, सो व्हाट आई डिड वाज आई स्टार्टेड इंक्रीजिंग माय इन्वेस्टमेंट्स, एंड जैसे जैसे सैलरी बढ़ती गई वैसे वैसे मैंने मेरा इन्वेस्टमेंट्स भी बढ़ाया। सो दैट्स बेसिकली स्केलिंग विथ योर इनकम। सैलरी बढ़ी है, आपका इन्वेस्टमेंट्स, चाहे वो इक्विटीज हो या फिक्स्ड इनकम हो या कहीं पर भी हो, उसको इंक्रीज करते रहे रेगुलरली। एंड थर्ड सबसे बेस्ट इज ऑटोमेट विद एसआईपीज, कि आप चाहे कर सको ना कर, आपने बैंक में एक मैंडेट बना दिया, आज 10,000 की एसआईपी है, अगले साल 12,000 की होनी चाहिए, उसके बाद वाले साल 15,000 की होनी चाहिए। यू कैन कीप ऑन स्केलिंग एंड यू कैन डू इट ऑटोमेटेड। ऑटोमेट कर दिया आपने, जो आपके बैंक अकाउंट को सैलरी हिट करती है, सेम विद इन द 5-7 डेज वो ऑटोमेटिकली आपके बैंक अकाउंट से एसआईपी हो जानी चाहिए, राइट। सो अगर अपना फ्रेमवर्क सही है, इफ वी आर एबल टू स्टार्ट राइट, देन आई डोंट सी अ रीजन कि हम क्यों वेल्थ नहीं क्रिएट कर सकते ओवर अवर वर्किंग करियर, राइट। आई होप यहां तक तो क्लियर है। गाइज प्लीज प्लीज फील फ्री टू आस्क क्वेश्चंस, टू प्लीज पोस्ट योर क्वेश्चंस इन द चैट बॉक्स, राइट। हम वी विल टेक अप द क्वेश्चंस एट द एंड ऑफ दिस सेशन। स्टार्टिंग फ्रेमवर्क की अगर हम जब बात कर रहे थे, तो आई ऑल्सो वांट टू थ्रो सम लाइट ऑन पर्सनल एक्सपेंसेस, राइट, क्योंकि वी अंडरस्टैंड एक वी जस्ट एक फाइनेंशियल फ्रीडम मिली है, राइट। जब तक हम कॉलेज में थे, जब तक हम स्कूल में थे, कॉलेज में थे, तो वी worked on, or rather we were dependent on our parents funding our expenses, right। जैसे फ्रीडम मिलती है, थोड़ा सा खुद का ये हो गया, तो वी स्टार्ट फंडिंग आवर ओन एक्सपेंसेस, राइट। पर्सनल एक्सपेंसेस अपने बढ़ते हैं, जैसे मैंने बताया, किसी को एक फोन खरीदना है, किसी को कोई कार खरीदनी है, किसी को कोई लग्जरी ट्रिप्स, दोस्तों के देखा देखी, फ्रेंड्स को देख करके we tend to get influenced by what happens around us. So एक पर्सनल एक्सपेंसेस है अपने, that also we need to control। और ये सब करने के बाद में what I believe is this is by and large the kind of framework जो हमें adopt करना चाहिए, right। इन्वेस्टिंग, ऑटोमेटेड एसआईपीज, डेट को अवॉइड करें, और जैसे जैसे अपनी सैलरी बढ़े, अपनी इनकम बढ़े, उसको हम बढ़ा सकते हैं अपने इन्वेस्टमेंट्स को। वेरी इंटरेस्टिंग पार्ट, एंड इंटरेस्टिंग पार्ट केवल ये नहीं है, इंटरेस्टिंग पार्ट इज एट द एंड ऑफ द सेशन ऑल्सो। सो प्लीज स्टे इन दिस वेबिनार, because at the end of the webinar there's something for you, and which will be very useful. It will be useful for you to how you can start, and how you can start at a lesser cost, right। So just to come back to the webinar, 10 years head start, that's your real advantage। अब ये कुछ मैंने स्टोरी तो खैर ठीक है, बट दिस इज हार्ड डेटा, राइट। किसी ने यदि 1000 रुपीज
इन्वेस्ट किए होते आज से, एंड वी कैन कोरिलेट दिस विथ करंट टाइम्स टुडे. ऑल ऑफ यू आर just finishing your formal education and moving into the professional world. अब कई बारी हमारा ये होता है कि 1,000 रुपीज बहुत छोटा अमाउंट है, सब हम कैसे स्टार्ट करें, 1,000 रुपीज से कुछ नहीं होगा. जब हमारे पास बड़ा पैसा आ जाएगा, हमारे पास 50,000 लाख रुपया आ जाएगा, तब हम इन्वेस्ट करेंगे, राइट? बट what I believe is even a small start made at the right time, and it's a very minuscule amount. 1,000 रुपीज, आई एम श्योर. आज जब मैंने खैर मेरा फॉर्मल एजुकेशन कंप्लीट किया, तो उस वक्त 1,000 रुपीज वॉज नॉट माई पॉकेट मनी, बट आई बिलीव यहाँ से एनीवेयर बिटवीन 3-5,000 इज द पॉकेट मनी दैट एन एवरेज कॉलेज गोइंग स्टूडेंट गेट्स फ्रॉम देयर पेरेंट्स. तो यदि हम उसमें से थोड़ा भी अगर हम इन्वेस्ट कर पाए, एंड व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट इज 1,000 रुपीज इन्वेस्टेड इन वन गो, वो तो कर ही सकते हैं. साल भर में 60,000 में से हम 1,000, 2,000, 5,000 तो इन्वेस्ट कर ही सकते हैं. व्हाट आई ट्राई टू डू हियर इज, यदि किसी ने एशियन पेंट्स, आई एम श्योर हर किसी ने एशियन पेंट्स का नाम सुना है, राइट? किसी ने एशियन पेंट्स के अंदर इन्वेस्ट किया होता इन द ईयर 1995, 1995 में एशियन पेंट्स में इन्वेस्ट किया होता, सो टुडे the price, the value of that investment would have become 1,50,000, right? So that's massive. 1,000 rupees invested is 1,50,000 today over a period of 30 years. 1,000 rupees कोई बड़ा अमाउंट नहीं है. Let's say even if you forget that amount, look back at it after maybe 5, 7, 10 years, 15 years, and I'll give you another, once I complete this, I'll give you another my story also. So Asian Paints, just for the sake of data, 1,000 रुपया इन्वेस्टेड वुड हैव बीन 1,50,000. एचडीएफसी बैंक में किसी ने यदि इन्वेस्ट किया होता 1995 में, 1,000 रुपीज वुड हैव बिकम 85,000, राइट? आइशर मोटर्स, आई एम श्योर एवरीबॉडी हैज हर्ड ऑफ आइशर मोटर्स आल्सो. आइशर मोटर्स 2002 में किसी ने इन्वेस्ट किया होता, अगले 23-24 साल में इट वुड हैव बिकम 86,000. पेज इंडस्ट्रीज अगेन 2007 में किसी ने इन्वेस्ट किया होता, 1,000 का 10,000 रुपया हो गया होता. I'll give you my example. And it's a interesting one, which was I was pleasantly surprised with that. So what happened? I had invested, back in the year 2011, I had just invested 5,000 rupees into a company. I'll not name it because that is not in my coverage. But I had invested into a company which was trading at 47 rupees. 47 rupees tha price, and I was, I had invested it for my wife, just उनको impress करने के लिए कि I am into the financial services, and let us start an account in your name. So I had invested 5,000 rupees, and fortunately for me, I forgot about that investment क्योंकि 5,000 रुपया था, छोटा अमाउंट था. I forgot about that. What happened? This is about 2011. When I looked at that, I just got some dividends. तो dividend का मैंने statement देखा, मैंने कहा ये stock मेरे पास में कब है? Then I checked with my broker, तो उन्होंने बताया कि साहब आपने 2011 में इन्वेस्ट किया हुआ. That price at that point of time when I invested, it was 47 rupees, and when I checked the price in March of 2024, it was 953 rupees, right? So the stock price was up 20x over this 10-12 years. Fortunately, I had forgotten, and I could reap the benefits. अगर हम ये बात देखें तो it comes up to around about 25%, 25-26% CAGR, right? तो इस तरह का starting small, and this was in my wife's name, by the way. So when I went to her and I told her that this is your investment and this is where it has grown, so she was very happy. She was very happy saying that and she, till that point of time, till 2024, though she had started her investments, but she had not actually seen what wonders investment could do and what wonders staying invested could do. So 5,000 के सामने, because 100 shares at 47 rupees was 5,000 rupees. 5,000 rupees invested was around about 95,000 rupees when I checked it after 12 years, right? So that's massive. What she did was, and luckily, and as women in India do, she had invested into gold, right? So again, so वो एक दूसरा benefit हो गया. But what I'm trying to say is investing
though it was a small amount for someone who's starting off, maybe 1,000 rupees, for someone who's been 10 years, तो 5,000 छोटा अमाउंट था. 5,000 छोटा अमाउंट इन्वेस्ट करने के बाद में what we could do is we could buy 1 point roughly 10.5 grams of gold, right, at with that money. और आज गोल्ड का भी हमने प्राइस देखा है. So the idea is how early we can start. भले it is a smaller amount, how small we can start, but start, get moving, get going. That is the whole point. And let the long term compounding work its magic, right? So this is the power of disciplined ownership. Disciplined hai. You do not panic when the market's correct. Market का nature है. When we talk about market, equity markets की यदि हम बात करें तो nature है market का. I have been in the market since 2003 and I have seen various cycles. I have seen 2008 global financial crisis. I have seen 2016 demonetization. I have seen 2020 COVID. I have seen 2022 the Russia-Ukraine crisis and the kind of a war situation and the geopolitical tension prevailing post 2020 on. So in this entire period, you know, what happens is what emotions can do and how emotions can harm you. Let's say if someone had invested 1,000 rupees in January 2020, for the sake of a proper calculation, यदि किसी ने जनवरी 2020 में 1,000 रुपीज लगाए होते तो मार्च 2020, आई एम श्योर मार्च 2020 हर किसी को याद है, राइट? That was COVID period. The whole country and the whole world was under a lockdown kind of a situation, right? 1,000 rupees invested, वो हो गए थे 620 रुपए. The market corrected by 38% in this in a span of during March. So 1,000 rupees fell to 620 rupees, right? But by December 21, in that 1.5 year period post the fall, the market again bounced back. We recovered and वहां से जो मार्केट है 3 गुना हो गया, राइट? सो जो आपका 1,000 रुपया इन्वेस्टेड था वो 620 रुपया हो गया और 620 से बढ़कर के 1,500 रुपया हो गया इन अ स्पैन ऑफ 1.5 year after the correction. So when we look at it, 2 years, January complete 2020 till 2021. So in a 2 years time frame, despite COVID, despite the world being in a lockdown kind of a situation, आपका इन्वेस्टमेंट अप्रिशिएट हुआ बाय 50%. 1,000 रुपीज जो है वो आपका 1,500 रुपीज हो गया बाय दिसंबर 2021. सिमिलरली अगर आप आज तक इन्वेस्टेड रहते in 5 years, so that 1,000 rupees would have been 3,200 rupees. ये नंबर्स है. नंबर्स हमें देखने के लिए या सुनने के लिए अच्छे लगते हैं, राइट? बट व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज you do not panic, you have patience. First of all, pick up very very good quality, high quality investment options, right? आप यदि कहीं पर भी इन्वेस्ट कर रहे हैं, जैसे आई ऑलवेज गिव दिस एग्जांपल कि whenever you go to a doctor, you go to the best doctor in your locality, right? or a best doctor for a particular ailment. Same ways आप जब भी इन्वेस्ट भी करें तो look for the best kind of guidance that you can get, right? And that is something which we'll cover at the end of the session also. So what I was saying was that you look for the best kind of guidance कि कैसे हम ये कर सके. Pick up the right kind of advisor, pick up the right kind of asset allocation आपका कैसा होना चाहिए. When I was growing up, there were 2-3 options. Gold था, real estate था, fixed deposits था. These were the 2-3 options, and कुछ पैसा बचा तो म्यूचुअल फंड में. But now there has been a complete shift. Now we are seeing financialization of savings. अब हम देख रहे हैं कि बहुत सारा पैसा म्यूचुअल फंड के अंदर आ रहा है, बहुत सारा पैसा डायरेक्ट इक्विटी के अंदर आ रहा है. With the advent of smartphones जब से आ गए हैं, ऐप बेस्ड सारा काम काज ऐप बेस्ड हो गया है. So app based, you can straight away with the right kind of research you can invest into mutual funds. You can invest into stocks, single stocks, a basket of stocks, etc.
So that is something which which I feel is a double edged sword. क्या होता है कि when you invest into the right kind of stocks, stay invested, so the outcome which you get is a mix of a lot of factors. It is a mix of patience. You have to have a lot of patience. It is a mix of not panicking. It is a mix of the right kind of advisor and the right kind of asset allocation. ये चार पांच चीजों का मिश्रण है जो आपका आउटकम होता है. सो कोई एक चीज भी यदि ऑफ ट्रैक हो जाती है, दैट्स वेयर द इन्वेस्टमेंट सफर्स. एंड suffers in the sense it suffers drastically because a 15% return vis-a-vis a 10% return, जमीन आसमान का फर्क हो जाता है. जस्ट जैसे हमने पहले वाले एग्जांपल में देखा, फंडिंग योर एक्सपेंसेस अपफ्रंट थ्रू डेट vis-a-vis सेविंग एंड देन इन्वेस्टिंग एंड देन फंडिंग द एक्सपेंसेस, इन दोनों के अंदर काफी अंतर है. और अंतर जैसे मैंने आपको बताया 5 साल के अंदर द डिफरेंस वाज 40 लाख रुपीस, राइट. So one has to be very wise, very prudent, very patient, and one has to not panic. The real key to making money in stocks is not to get scared of the out of them. The famous investor Peter Lynch has this saying that you should not be scared of investing. Volatility is the entry fee. Now this is one really a good way of looking at it. As I said, मैंने 2008 देखा, 2013 देखा, 2016, 2020, 2022 और 2024 जब से मार्केट ने करेक्ट किया. सो अगेन मार्केट विल गो थ्रू दिस अप्स एंड डाउन्स. मार्केट जो है वो अप्स एंड डाउन्स चलता रहेगा. We have a US president saying something about tariffs and the market corrects over here. We have one trade deal announcement and the market rises and then the market again. So market can remain volatile, but then the whole thing is volatility is the entry fee. यदि आप अपने सही समय पे इन्वेस्ट किया and if you're not scared of investing, भले start small. If you have 1,000 rupees, if you have let's say 1 lakh rupees, start small, start 10,000 rupees, start 20,000 rupees, but at least start something because this will give you that kind of return. और जैसे हमने बताया previous slide में, January 2020 में 1,000 rupees invested was down to 620 rupees. So it was a 38% fall. But that March 2020 to December 2021 period saw a 300% or a 200% increase because 680 rupees became 1,500. So double the this thing, not 100% return. So not getting not panicking and not being scared of the volatility, but that is the cost that you would pay. कि भाई आपने volatility में you just stay invested, remain patient. 1,000 rupees invested when the market had corrected in 2008 became 2,600 rupees after 5 years because that was a fairly longish period जहां पर market was subdued for a longer time. But यदि हम 2013, 2014 और उसके बाद की बात देखें, because of a lot of factors, there was a lot of a lot of participation from first time investors. There was a lot of participation. Smartphones आना शुरू हो गए थे and financial knowledge बहुत ज़्यादा accessible हो गई थी लोगों के पास में. So within a 1-2 year period, 2013 के हमने फॉल में इन्वेस्ट किया होता 1,000 rupees, तो within a period of 2 years, by 2015, that 1,000 had become 1,800 rupees, right? So close to 80% gain in a period of 2 years. That is close to 40%. Now tell me, how many asset classes? I'm sure आप asset classes समझते हो. Gold is an asset class, real estate is an asset class, आपका fixed income is an asset class. So how many asset classes deliver these kind of returns? Yes, returns थोड़े से नरम भी हो सकते हैं जैसे we've seen in this past 1.5 year. But when we talk about gold, it is close to 15-17% kind of return, and that is especially in this last 1.5 year where the gold price has shot up all of a sudden. But other than that, your fixed income would give you anywhere about 5-7%. Your real estate would give you around about 5-7-10% max. Gold would have, as I said, in this, if we discount these 2 years, that was also in the range of 10-11%. And इक्विटीज एज एन एसेट क्लास की अगर बात करें तो अगर आप देखें लास्ट 5 साल का ग्रोथ,
तो गोल्ड, क्योंकि 2 साल हमने लास्ट के अगर हम निकाल दे, सो अगर हम जोड़ दें तो इट इज बिकम 120% एब्सोल्यूट रिटर्न, विच कम्स अप टू 17% CAGR. इक्विटीज, अगर हम निफ्टी की बात करें तो विच इज अराउंड अबाउट 12%, 12.5% CAGR, कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ. फिक्स डिपॉजिट की बात करें हम, बैंक के FDs की बात करें या कॉर्पोरेट FDs की बात करें, तो दैट इज 5.5-6% CAGR से बड़ा है. और रियल एस्टेट की भी बात करें, एंड रियल एस्टेट का एक एग्जांपल, आई वांट टू गिव यू दिस एग्जांपल. रियल एस्टेट में एज यू कैन सी हियर 5% का ग्रोथ है, बट 5% के ग्रोथ के लिए पीपल टेक आउट अ 7% और 8% लोन, राइट? So one has to be very prudent, one has to be very very precise in determining what is the asset class that one wants to invest into, right? And how he should be going about investing. और मेरा ये मानना है कि at least in your case, the kind of audience that we have today, majority of you would not be aware of how to navigate this very tricky path, how to navigate this very tricky path. Secondly, क्या करना चाहिए एग्जैक्टली? चलो हमें पता चल गया इक्विटीज करना है या फिक्स्ड इनकम करना है. सो व्हाट इज द काइंड ऑफ प्रपोर्शन, what should be your ideal asset allocation? You cannot be having 100% into one stock, right? It has to be a mix of proper, let's say example, if I have to give you one, just a couple of examples. There's this fintech company which was down 40%. IPO के price से it had fallen 80%, but now it is at 50% of the IPO price. हालांकि that price also it has not been able to reach. So what I'm trying to say is one has to be very careful about where he invests, how much money he invests. If I have, let's say, 1 lakh rupees and someone tells me, Chirag, invest into TCS or Chirag, invest into XYZ stock, I cannot be putting my 100 rupees into that. I have to have a proper asset allocation. 30 rupees I could be buying into maybe debt, 50 rupees I could be putting into equity, 10 rupees I would be putting into gold, right? 10 रुपए में रियल एस्टेट तो नहीं आता, but what I would try to do is, and I would try to bifurcate, and as there's this cliched saying that do not put all your eggs in one basket. So one has to be very one has to be very precise, one has to be very sure about where, how much one can invest, right? Balanced asset allocation is something that one should look at. Around about 50-60% into equities. Fixed income could be around about 15%. Gold is another 15%, and cash also. Maintaining cash, liquid money is also very important, right? So that is something one has to understand. और ये सारी चीजें आज अपना वेबिनार करने का पॉइंट ही ये था, या पॉइंट ही ये है कि वन एटलीस्ट वी कुड गिव यू सम हेड स्टार्ट कि भाई कहां से शुरू करें, कैसे शुरू करें, राइट? कैपिटल एलोकेशन, एज आई सेड, इज अ डिसिप्लिन. आप कहाँ पे इन्वेस्ट करते हो? मोस्ट पीपल बाय स्टॉक्स, प्रोफेशनल्स एलोकेट कैपिटल. वेरी ब्यूटीफुल सेइंग. जस्ट बाइंग स्टॉक्स वर्सेस एलोकेटिंग कैपिटल. आपने किस एग्जांपल, 2 स्टॉक्स बाय कर लिए, वन इज इनटू लेट्स से ऑटो एंसिलरीज, वन इज इनटू a fintech kind of a business or an internet economy kind of a business. So how much capital you allocate to what kind of sector or what kind of stock? उसकी कोई भी स्टॉक में आप ये करते हो तो what is the advantage? Now let's say if I give you an example, आज से 20 साल पहले 2-wheeler 4-wheeler companies were very big, right? उस वक्त fintech and this internet economy was not that big. So the kind of money those kind of stocks made, will they make the same kind of money? Should I allocate that same kind of capital what I allocated earlier as compared to what I should be allocating now, considering that today the smartphone penetration is there, today we have a lot of information, so one has to be very sure कि कहाँ पर कैपिटल एलोकेट करें, कितनी मात्रा में करें. जिस भी हमने कंपनी में इन्वेस्टमेंट किया है उसकी क्या बिजनेस एडवांटेजेस है, अर्निंग्स है क्या, ड्यूरेबल है क्या अर्निंग्स, रिस्क फैक्टर्स क्या क्या है, बिकॉज टुडे इन दिस कनेक्टेड एंड ग्लोबलाइज्ड सिस्टम, a sneeze in the US and we could catch a cold over here,
राइट? वहां पर अगर कोई छींकता है तो उसके रेपरक्यूशंस हमारे मार्केट में होते हैं। एंड हमारे मार्केट मतलब आई एम नॉट स्पेसिफिकली सी व्हेन आई टॉक अबाउट मार्केट, मार्केट का ये मतलब नहीं है कि केवल इक्विटी मार्केट, इट इज द एंटायर फाइनेंशियल मार्केट्स, राइट? तो यूएस के अंदर बॉन्ड यील्ड्स बढ़ने से भी हमारे इक्विटी मार्केट को, अभी बॉन्ड विच इज फिक्स्ड इनकम और हमारा इक्विटी दो अलग अलग एसेट क्लासेस है, बट यूएस के अंदर बॉन्ड यील्ड बढ़ने से हमारे इक्विटी मार्केट्स पे रेपरक्यूशंस हो सकते हैं। सो रिस्क फैक्टर्स क्या है, वहां पर कौन है, वहां पर पॉलिटिकली which party or which who is sitting there, which person is sitting there, that also matters। वहां का चेयरमैन या वहां के रिजर्व बैंक जो फेडरल रिजर्व जिसको बोलते हैं, वहां का चेयरमैन कौन है, देयर आर लॉट ऑफ फैक्टर्स। तो ये सारी चीजें हैं, वन हैज टू अंडरस्टैंड कि भाई कंपनी में या जहां पे भी हम इन्वेस्ट कर रहे हैं उसका बिजनेस एडवांटेज, उसकी ड्यूरेबिलिटी, उसका रिस्क फैक्टर्स क्या है। एंड अल्टीमेटली वन हैज टू बी वेरी रैशनल। आई कैन नॉट बी इन्वेस्टिंग 50 रुपीज इनटू वन स्टॉक एंड 50 रुपीज इनटू और 25 रुपीज इनटू अदर, बिकॉज वो ओवर कॉन्सेंट्रेशन हो जाएगा। लेट्स से इफ दैट स्टॉक फॉल्स बाय इवन 50%, that is as we've seen in the market, right? Markets can fall by 20-30%. So agar if that stock fall by 50%, straight away 25% of my capital is gone because I had invested 50 rupees. So one has to be very rational in the allocation also। और दूसरा सबसे जरूरी बात, discipline। one has to be very very disciplined। one has to only take the kind of risk that he can afford, राइट? ऐसा नहीं कि एज आई सेड 100 रुपीज लगा दिए देन रातों की नींद हम खो दे। वी ऑलवेज कीप ऑन वरीड, बी वरीड। one has to be very disciplined, only take disciplined or make disciplined informed decisions and remain disciplined in your entire investment journey। So what serious investing actually requires all of these things, you know। Scenario one, product allocation। Again, see, this is something which I was talking about कि risk control होना चाहिए। Someone who's put 60% money into a stock vis-a-vis someone who's put 30% or 3% or 10% allocation in a particular stock। So 10% allocation, when the market falls, that will fall lesser as compared to an over concentrated portfolio which has fallen by 18%। So in one case you see the portfolio is down by 3%, whereas in the other case the portfolio is down by 18%, right? So this is something when the market crashed by 30%. So this is something when what one should look at, right? Lastly, with and I was just talking about this with someone that today when we open Instagram, we have a lot of people saying a lot of things. Some says the market will correct, some says invest into XYZ stock which will become a crorepati, you'll become a crorepati overnight। So all of these things, there's a lot of noise, and one has to be smart enough in differentiating noise from the facts, राइट? नॉइज तो बहुत सारा है, जितना आप देखोगे उतना आपको you'll feel a lot of or you'll get a lot of opinions, different opinions of different people। but one has to be smart enough in differentiating कि भाई नॉइज क्या है और एक्चुअल इन्वेस्टमेंट्स क्या होता है। एक्चुअल इन्वेस्टमेंट फोकस करता है अर्निंग्स के ऊपर, एक्चुअल इन्वेस्टमेंट फोकस करता है रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर, राइट? आपका पोजीशन साइजिंग जो मैंने आपको बताया कि 100 रुपए है आपके पास में, यू कैन नॉट बी इन्वेस्टेड 70-80% इन अ पर्टिकुलर स्टॉक। यू हैव टू साइज योर पोजीशंस कि कितना पैसा हम, लेट्स से वो पैसा अगर 10% गिर जाता है तो इफ यू इन्वेस्टेड 10 रुपीज, you that becomes 9 rupees, vis-a-vis you've invested 80 rupees and that becomes 72 rupees, right? So one has to be aware of all of these things। structure तरीके से इन्वेस्ट करे, इंस्टीट्यूशनल प्रिंसिपल्स हैं कि भाई अर्निंग्स के ऊपर फोकस करे, रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर फोकस करे, टाइम होराइजन। आप ये नहीं बोल सकते कि इक्विटी में इन्वेस्ट कर रहे हो। लेट्स से इफ यू हैव डिसाइडेड टू इन्वेस्ट इनटू इक्विटीज, you cannot be saying that I want to invest into equities and after 3 months I want that money। equities require a certain time, market goes through cycles, and if you're caught in the wrong cycle, then it requires time। so give at least 3 to 5 years, more the merrier। जितना आप ज्यादा कर सको उतना बेटर है, but at least 3 to 5 years, and उससे ज्यादा जितना हो सके, at least for you to see some kind of return। and that I can tell you with a certain degree of authority that you will be pleasantly surprised when you look at the your investment result or the investment outcome after 3 or after 5 years। you will be pleasantly surprised, as was my case, the story which I explained earlier।
right? Building investing maturity is something that is important. So decide whether you want to do it yourself. First is start structured monthly allocation. Again, as I said, the whole point is कि लाख रुपया मेरे पास में मेरी अर्निंग है. Start in a structured manner, monthly, 1,000, 2,000, 3,000, whatever amount you can save up. Secondly, track earnings, whatever, and I'm sure all of you, with the advent of, as I said, a lot of information now, all of you have some idea as to, what is the price, and there's a lot of information available. So price ko check na karke, whatever you have invested into, track the earnings of that particular, let's say if you invested into XYZ stock, so is that XYZ stock doing well? Is the top line of that business growing? Is it actually making EPS, जो अर्निंग पर शेयर बोलते हैं या फिर नेट प्रॉफिट बोलते हैं, तो is it increasing, right? If it is increasing, then I'm sure the price also will catch up. So do not track the daily price, track the earnings if at all you want to do it by yourself. If not, then there is always Advisor Alpha which can guide you as to how you should be doing, right? Thirdly, separate conviction from concentration. Again, किसी ने बोल दिया XYZ stock ले लीजिए, he is very convinced, but उनके conviction पे I cannot concentrate entire earnings into this thing, so I have to be convinced. So you have to first differentiate कि I cannot concentrate all my this thing, I have to be convinced, and then there comes the allocation also कि भाई कितना allocation हमें देना चाहिए. Increase your allocation with income growth, which is the fourth point. 1 lakh rupees has become 2 lakh rupees, your salary I'm talking about. So once the salary increases, your allocation should also increase. By and large, roughly around about 20-25% तो should be your investment. खर्चे आप कंट्रोल, खर्चा भी उसी हिसाब से करें. आपकी 100 रुपए की इनकम थी, जहां पे आप 50 रुपया खर्चा कर रहे थे, 20 रुपया सेव कर रहे थे. आपकी 200 रुपए की इनकम हो गई, तो आप 20 के बदले 40 रुपया सेव करें. द परसेंटेज रिमेन्स द सेम एट 20% रफली. सो जैसे 200 की 500 हो गई, तो 500 पे आप 20%, विच इज 100 रुपीज, यू स्टार्ट इन्वेस्टिंग. सो जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ रही है, यू कैन इंक्रीज योर एलोकेशन ऑल्सो. Lastly, and the most important thing, and this is something which I was coming to when I said ki, at the end of the session, decide whether you want to do it by yourself. Now tell me one thing, and I'll give you my example again. Having spent 20 years in the industry, 23 now, I started in 2003, so 23 years in the industry, finance graduation, 20 years of experience. If you ask me today what I should be doing, is I would still at this point of time rely on a professional money manager to manage my investments. Why? Because the kind of role that I am, my job requires a certain degree of my time, my family, my other other activities require my time. So कहीं ना कहीं ये लगता है मेरे पास में कि I may not be able to do it that efficiently. Even if I may be able to do it, शायद रिटर्न 5% होता, जब बाजार में 15% की अपॉर्चुनिटी थी, मैं 5% कमा करके बैठा हूं. So I am doing a disservice to myself. I am doing a disservice to the capital which I am sitting on. If I am sitting on, let's say, a 10 lakh rupees investable surplus, आज की तारीख में 10 lakh rupees at 5% would be 50,000 rupees, right? 10 lakh rupees at 15%, in 1 year's time also, that would be 1.5 lakh rupees. So one has to be very sure about this also, ki whether he has the know-how of investing or doing it yourself. DIY is do it yourself. So whether he is capable of doing it by himself, if he is capable of doing it by, he or she is capable of doing it by himself, then whether I am able to capture the optimum returns vis-a-vis the risk that I take. तो ये सारी चीजें करने के बाद में वन हैज टू बी श्योर कि यदि हम ये नहीं कर पाते, इफ आई एम नॉट एबल टू डू इट बाय माई सेल्फ, और इफ माई रिटर्न्स आर नॉट दैट ग्रेट, और इफ आई एम लूजिंग मनी बाय डूइंग इट बाय माई सेल्फ, देयर इज ऑलवेज पीपल लाइक एडवाइजर अल्फा हु कैन गाइड यू, हु कैन ड्रॉ अप अ प्रॉपर एसेट एलोकेशन फॉर यू कि हमको कहाँ पे कितना इन्वेस्ट करना चाहिए. हमें म्यूचुअल फंड्स में करना चाहिए, विच विल बी कमिंग अप विथ, हम सिंगल स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, हमें बास्केट ऑफ स्टॉक्स में
इन्वेस्ट करना चाहिए. तो ये सारी चीजें. सो and the mistake which I made is I did not have a system first. I started with capital, whereas what you guys have a head start again. वही 100 मीटर वाला केस में you are already at a 20-meter advantage because you are building systems first and then scaling your capital. What I did was the reverse. I had a lot of capital by virtue of being into working early and saving up some money. तो मेरे पास capital था, but I did not have the proper systems. I did not have the proper know-how, right? And that's where my returns also took a hit. So what I could have made vis-a-vis what I made in my earlier years, there was a stark difference. So at least in your case, you have this advantage where you have the systems in place, and then you can allocate capital and that start scaling them. What actually creates multi-baggers? I'm sure हर किसी ने multi-bagger का नाम सुना होगा. Multi-bagger, you know what is a multi-bagger? Multi-bagger is आज 100 rupees become 200, 300, 500 rupees. So 3x, 5x types. And price, कोई भी स्टॉक का प्राइस जो है, प्राइस फॉलोज अर्निंग्स. मार्केट कैन रिमेन इरेशनल, फिर वो नीचे भी आ जाएगा. अर्निंग्स जब तक ग्रो होगी तब आपका प्राइस भी ग्रो होता रहेगा. एज यू कैन सी हियर, you know, the price, the dotted line is the price, right? Stock price. And the blue, the dark blue line is the earnings. So जब earnings grow हो रही है तो price will catch up. There are times when the price was more than the earnings, but then it fell and then it ultimately catches up. So this is in short about I've taken what 50 odd minutes. So this is basically about how one should be going about in their investment journey. What are the common pitfalls? Serious investing requires a framework, right? उसमें कुछ pitfalls भी है. You are chasing ideas and hot themes जो आजकल भी easily available. Please refrain from doing that. Reacting emotionally to volatility. Oh, the market is correcting. Let us get out of equities and let us sit on cash. You are reacting emotionally. Please avoid that. Over allocating to a single position. We've talked about this. And constantly switching strategies. This is something please avoid, right? Do not do that. Have a proper structured framework. Research backed ideas, that is what Advisor Alpha does. Defined allocation, that is what Advisor Alpha does. Portfolio discipline and risk management, साधारण व्यक्ति नहीं कर सकता. एक professional money manager like Advisor Alpha does that. And transparent, rational and compounding focus. Lastly, Advisor Alpha exactly करता क्या है? It's a research backed philosophy. SQ-GARP हमारी philosophy है, which is research backed. We want to invest into sustainable, quality and high growth businesses, but at a reasonable price. So these are research backed. They follow a disciplined philosophy, high conviction ideas hai, and discipline over noise. You know that we've talked about. So coming to the end, what I would we have an exclusive offer for you. You can scan the QR code, right? And you can avail the 1 month access to stock ideas. You can have 1 month access to the entire portfolios also. So please, I would urge you to scan the QR code. Have a look at the Advisor Alpha platform. It's a beautiful platform. You can download the application and have a look at the ideas, the kind of stock ideas, the kind of returns that the stocks recommended by Advisor Alpha have given, and benefit. The whole thing is start early, start small, but start and remain disciplined, remain focused, and remain long term. You will be pleasantly surprised at the end of the investment journey. So that is it from my side. Ronak, over to you. If we have any questions, we would love to take the questions. Thank you, Chirag. So there are some questions in the comment box. The first one is investment पे tax कैसे save करें? Chirag. इन्वेस्टमेंट पे टैक्स कैसे सेव करें? हाँ. सर इन्वेस्टमेंट पे टैक्स, देखिए टैक्स तो कहीं पर भी आप ये करें. टैक्स सेव करना वो तो बाद की बात हो गई. पहले हम इन्वेस्टमेंट तो करें, इन्वेस्टमेंट से रिटर्न तो बनाएं. आज की तारीख में व्हाट आई हैव सीन एंड व्हाट फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर्स दे डू इज दे लूज मनी. अब पैसा जब लूज किया है तो टैक्स की बात ही आती नहीं है. आप शुरू करें. द आइडिया हियर इज टू स्टार्ट. एंड टैक्स की बात भी कब आएगी? टैक्स की बात तब आएगी जब आपने रिटर्न्स बनाया. रिटर्न्स लास्ट 1.5 साल में तो किसी ने नहीं बनाया है, या बनाया तो बहुत मिनिस्क्यूल, या इफ यू आर वेरी लकी देन यू मेड सम काइंड ऑफ रिटर्न्स. तो टैक्स इज समथिंग व्हिच आई वुड कीप इट फॉर अ लेटर डेट, है ना. द आइडिया हियर इज टू गेट पीपल टू स्टार्ट इन्वेस्टिंग.
Okay, then the next question is, if I had started investing with small amounts, which is हाँ. a better stock, which is better, stocks or mutual funds? Again, mutual fund is a basket of stocks, whereas single stock is a stock. So again, investing into let's say if you have only 100 rupees, you mean to say I want should I invest 100 rupees into mutual fund or 100 rupees into a single stock? I would say 50 or maybe 10 rupees into a single stock and 90 rupees into a basket of stocks, because as I said, over concentration नहीं होना चाहिए. If I would have told you to invest 50 rupees in a single stock, वो भी मत करिएगा, right? Because that will be concentration risk. तो आप 10 रुपया सिंगल स्टॉक में करें, 90 रुपया बास्केट में करें, म्यूचुअल फंड की बास्केट में, या विच एवर स्टॉक बास्केट दैट यू कैन ले योर हैंड्स अपॉन. Is so the next question that I have is emergency funds. Is it important to build your emergency fund somewhere, or should we? So because now because everyone is thinking now gold is your saving thing. Again, as gold investment is the best investment, uh, but in the recent times you've seen gold has been falling quite a lot. सी आई टेल So यू गोल्ड, आई गेट योर पॉइंट. आई टेल यू गोल्ड का कैसा है. सी इंडिया के अंदर गोल्ड इज ओनली परचेज फिजिकली. मेजोरिटी केसेस में फिजिकली गोल्ड परचेज करते हैं. एंड आई नो एटलीस्ट इन माई फैमिली एंड सो मेनी पीपल हुम आई हैव मेट, गोल्ड प्लेज करना एक बहुत बुरी बात मानी जाती है कि भाई गोल्ड को हम प्लेज. गोल्ड पहली बात तो कोई खरीदता है तो बेचता नहीं है, राइट? तो गोल्ड को हम प्लेज भी नहीं करते. तो इफ यू इन्वेस्टेड इनटू समथिंग, वो पैसा जो है आपका नोशनल दिखता है कि भाई गोल्ड की कीमत वो 60,000 रुपीज पर 10 ग्राम्स. टुडे इट इज रफली 1,50,000 रुपीज पर 10 ग्राम्स. बट हैव यू बीन एबल टू टेक आउट दैट मनी, टेक द मनी ऑफ द टेबल? अगर आपने फिजिकल गोल्ड में इन्वेस्ट किया तो वो नहीं होता है. सो देर आर वेरियस वेज ऑफ इन्वेस्टिंग इनटू दिस थिंग. गोल्ड बीज हो सकता है, म्यूचुअल फंड्स हो सकता है. तो आप अपने इन्वेस्टमेंट्स को इस तरह से स्प्रेड करें, which also one should look at liquidity. I have come across people who say I have invested into a residential house, right? रेजिडेंशियल हाउस की दो तरह की इनकम है. एक तो रेंटल इनकम हो गई आपकी, और दूसरी होगी कैपिटल अप्रिसिएशन. बट जब कैपिटल अप्रिसिएशन, आप रेंटल इनकम तो ले लिए विच इज 2-2.5%, तो क्या आप कैपिटल जब आपको चाहिए तब आपको मिल पाएगा? मैंने एक मकान लिया था और वो मकान बेचने में मुझे 1.5 साल लग गया, बिकॉज आई वॉज होल्डिंग ऑन टू वन प्राइस एंड द बायर had come, no one was in that range. Ultimately I had to sell it at a 5% discount to my price, my selling price. So one has to also look at liquidity. One has to also look at how the entire this thing is, whether I am over allocating to a certain sector or over allocating to an asset class. One has to take into account all of these things also. okay. So the last I'll ask you this because we're already over time, short time. Okay, okay. So the last question I'll ask you, what are like you've explained about investing, you have explained about frameworks, you explained about this thing. What are the simple common mistakes what a student like a lot of students are watching this webinar. What should they avoid? What should they avoid? Please avoid noise. And this is, it's very noisy. It's a very noisy world outside. Noise in the sense, there is this FOMO also, fear of missing out. अरे इक्विटीज में पैसा बन गया, अरे गोल्ड में पैसा बन गया, सिल्वर में पैसा बन गया. No one actually knows, and especially with the kind of audience that we have, it's very easy. See, we are young, we are very prone to get influenced by what we see around us. So please distinguish कि भाई नॉइज क्या है और एक्चुअल फैक्ट्स क्या है, एसेट एलोकेशन क्या है, डिसिप्लिन क्या है, रिस्क मैनेजमेंट क्या है, ये सारी चीजें समझे. इसलिए बोल रहे हैं कि थोड़ा सा छोटा स्टार्ट करें. शायद नॉइज में भी अगर आपको इन्वेस्ट करना है, छोटा स्टार्ट करें. Even if you take a loss, that will not be that big, but ultimately the goal is that you move to a proper guided investing and discipline. अब डिसिप्लिन खुद के अंदर नहीं होता है. इफ यू हैव अ कोच, इट्स लाइक गोइंग टू अ जिम. व्हेन यू गो टू अ जिम, you do not train yourself properly, whereas when you are guided, it's about going to a doctor. You do not take medicines randomly unless and until your physician guides you कि ये दवाई ये टाइम पे लेनी है. Same is the case with investing. I don't see a difference in all these three. So guided investment होना चाहिए, asset allocation होना चाहिए, risk management होना चाहिए, patience होना चाहिए, and ultimately आपको results भी उसी तरह से दिखेंगे.
So I think we should wrap it up. I think it's been a very long session. It's been a longish session. I thank you, my dear audience, for attending and being patient for the past hour or so. I had planned to wrap up in 35-40 minutes, but क्योंकि young audience थी और मुझे लगा कि I should guide them, with whatever my experience. I have just tried to share my experiences and my knowledge. I hope it has been useful. I hope it has been some value addition to you, and we look forward to doing such webinars with such an audience again. Thank you, Yeah. Ronak. So thank you everyone for this lovely, for attending with and bearing with us. Chirag has taken one of the longest sessions of this time. Longest session. Yeah, yeah, yeah. Yeah. So thank you for everyone staying on board and learning about it. Stay in touch with us. Follow our YouTube channel, our Instagram channels to follow more advices, tips. You can download our app. I'll be putting up the app's QR code again so that people can review and download it if they want to, and start investing. So I think the best way to do is start early. You get more money. You'll be rich. So that's the mantra I think you should guys follow. So that's about it. Thank you so much. Stay in touch. We'll be connected again. We have this series of webinars going every week, so you can connect with us every week. Mostly we do it on Fridays at around 3 to 4 p.m. के बीच में. So stay in touch. We'll keep you updated for the next webinar. Thank you. Thank you, Dean.